Mia Sab, once people start getting into astrology, there's so many different systems, right? And I know aapka bada unique perspective hai on which system to use. So how do people make that decision कि हम ये सिस्टम पकड़ें वो पकड़ें? हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे सिस्टम हैं, जिनमें बाबेलियन सिस्टम है, इजिप्शियन सिस्टम है, मुस्लिम सिस्टम है, जो हम यूज़ करते हैं वो वैदिक सिस्टम है, रशियन है, चाइनीज़ है, देयर आर सो मैनी. हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है कि कौन सा सिस्टम वेस्टर्न या इंडियन कौन सा लिया जाए. हम यहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो इंडियन सिस्टम है, जिसको हम वैदिक कहते हैं. हालांकि जो हमारा अपना सिस्टम है मुसलमानों का, जिसपे उम्र ख़याम ने, इब्नुल अरबी ने, अल-हैतम ने, अल-बैरूनी ने बहुत सारा काम किया है, और हारून रशीद ने और मामून रशीद ने तो बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी इस पे, स्टार गेजिंग पे, और उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम. हमने अपना वो सिस्टम छोड़ दिया क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इंडिया से माइग्रेट हुए थे और उन्होंने वहीं से सीखी थी. तो हम यहाँ वैदिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. इंडियन सिस्टम को हमने वैदिक सिस्टम का नाम दे दिया. वो ये लफ्ज़ जो है वो वेदांता से आया, उन्होंने वेदांता से लेके इसको वैदिक बना दिया. तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने सिस्टम पे रिसर्च करनी चाहिए और हमें अपने सिस्टम को ही प्रमोट करना चाहिए. One other confusion, Mia Sab, that people have when they start getting into astrology is the concept of fate and free will. How do you see this being linked with astrology? Is everything already determined by the stars in our lives? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. फेट एंड फ्री विल वाला जो है बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है. इसमें मैं आपको कई तरह की मिसालें दे सकता हूँ, मगर हमने यहाँ नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी की गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब ये बताऊँगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर रिटन्स. तो वो आपने वो लेके पैदा हुए हैं. जिस तरह आप अपनी जीन्स में अपना रंग, अपनी लैंग्वेजेस जो आपने बोलनी होती हैं, या अपनी हाइट, या अपना जो आपका जो कम्प्लेक्शन है, ये चीज़ें आप लेके पैदा थे. सर्टेन थिंग्स जो हैं जो आपको अल्लाह ताला ने खुद दी हुई हैं कि अपना पढ़ना कितना है, मेहनत कितनी करनी है, कौन से फील्ड में जाना है. तो एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प, आपको ये हेल्प दे सकती है कि आप कौन से साइड पे जाएं और कौन सा अपना प्रोफेशन चूज़ करें. मगर जो चूज़ वो करना है और जिसमें वो मेहनत करनी है, या वो जिसमें आपने आगे जाना है, पढ़ाई करनी है, या जो भी आप अपनाना चाहते हो अपना फील्ड, उसमें फिर आपको खुद अपनी मेहनत से जाना पड़ेगा. एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प आपको डिटर्मिन करने में कि कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा है. एग्जैक्टली ये आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चली रही है पास्ट कर्मा की. And one other thing that we know is astrology को typically future या even present के साथ associate किया जाता है. But is it something that can help us understand our past and where we come from? तो ये आप astrology can help you in discovering your DNA. आप एस्ट्रोलॉजी से आप अपना DNA भी ढूंढ सकते हो, और उसकी हेल्प की वजह से आप काफ़ी चीज़ें जो आपके पास्ट में हुई हैं उनको भी डायग्नोज कर सकते हो. हमने इसको प्रेडिक्टिव साइंस में डाल दिया है. दिस इज़ अ हेल्पिंग टूल, जिसमें आप अपने मुतालिक डायग्नोज कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें करके आए हैं पास्ट. Right. And I mean, so in terms of people learning to make choices through astrology, would you recommend that people start going to professionals, or should they start studying astrology and incorporating it into their own lives? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात आपने की है. हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल हैं दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड. आई एम सॉरी टू से, प्रॉपर उन्होंने एजुकेशन नहीं ली, या प्रॉपर टीचर्स से उन्होंने ये सीखा नहीं है. दे आर सेल्फ लर्निंग. जितने भी एस्ट्रोलॉजर, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, या उन्होंने यहाँ से भी सीखा है, अपने कई सालों के साथ उस्तादों के रह के सीखा है. तो मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह वेस्टर्न्स आजकल या इंडियंस पढ़ रहे हैं, तो हमारी यंग जनरेशन को चाहिए, आम लोगों को चाहिए जो हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक पढ़ना चाहिए और अपना कैरियर डिसाइड करने में या अपना
جو پاتھ ہے ان کا کہ کس سائٹ پہ جانا ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ان کو اس ٹول سے مدد لینی چاہیے کہ وہ بیٹر انوائرمنٹ میں جا سکیں اور بیٹر اپنے لیے اچھا کوئی راستہ چن سکیں جس پہ وہ کامیاب ہوں. Mia Saab, if we could now come to more of your personal journey with astrology, was there a particular moment or experience that really made you believe in the power of astrology where you went like, this is real, astrology is real? یہ بڑا ٹرکی کویشچن ہے آپ کا. میں نے کئی دفعہ اس کو اپنی لائف میں اور اپنے دوستوں کی لائف میں بڑا کلوزلی دیکھا اور اس کو میں نے ان چیزوں کو ہیپننگ ہوتے دیکھا کہ کس طرح اسٹرالوجی سے آپ مدد لے کے اپنا اچھا ٹائم ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور کسی طرح آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ دس از اے ڈیفیکلٹ ٹائم اور اس ٹائم پہ مجھے کچھ چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ہمیں بعض چیزیں ہم مسپلیس کر بیٹھتے ہیں یا بعض الیکٹرانکس چیزیں ہوتی ہیں یا ہمارے ٹیلی فون یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سڈنلی میل فنکشن شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مگر جو آدمی جانتا ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس سچویشن سے نکال سکے. I mean, speaking of retrogrades, کیونکہ retrograde کا کافی ایک ذرا scary سا concept بنا دیا گیا ہے in modern astrology, pop astrology. تو there are some people who during retrogrades they just stop doing anything important. Do you agree with that? I don't agree with that. Okay. retrogrades جو ہیں وہ ایکچولی آپ کو وہ سچویشن کو ریوزٹ کرنے کی چاہیے. اگر آپ نے وہ کچھ لکھانے والے ہیں, آپ کچھ رائٹنگز کرتے ہیں یا کچھ آپ کے جو ہیں یہ پروگرام جس طرح ریکارڈ کرتے ہیں تو جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ان میں سے ہمیں جب ہم دوبارہ ان کو دیکھتے ہیں تو کئی غلطیاں نکلتی ہیں. ریٹروگریڈ ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ ہم اپنے انسٹرومنٹس چیک کر لیں, ہم اپنے فونس کو چیک کر لیں کہ ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ان کو کوئی خرابی تو نہیں آنے والی. ریٹروگریڈ ہمیں کئی چیزوں کی علم دیتا ہے, ریویژن کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ آپ اس کو ذرا ریوائز کرتے ہوئے دیکھ لیں. اور جب ہم اس کو ریویژن کرتے ہیں, ریوائز کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی ساری غلطیاں ملتی ہیں. تو ریٹروگریڈ از اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ وہ آپ کو ایک ٹائم دے دیتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے 2, 4, 6 مہینے میں یا وہ جس چیز کے متعلق ہے, مارس ہے یا وینس ہے یا مرکری ہے, جب ریٹروگریڈ ہوتے ہیں تو جو چیز ان چیزوں کے متعلق ہے ان چیزوں کا ہم جب ریوزٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کافی چیزیں ہمیں اپنی غلطیاں محسوس ہوتی ہیں اور ہم اس کو بہتر طریقے سے دوبارہ کر سکتے ہیں.